This operation requires the helicopter speeds to be dropped significantly, forcing the pilots to operate at the fringes of the aircraft's limit. This requires immense training and high skill levels. Today, this display of precision is being done by Wing Commander Mayank Paliwal and Squadron Leader Mohit Thakur. हमारे जिन दर्शकों का अभी अभी इस स्थान पर आगमन हुआ है, उन सभी के लिए हम एक बार फिर से इसे पुनः दोहराते हैं। हमारा मी-17V5 हेलीकॉप्टर एक बार फिर से इसी कार्रवाई को करके दिखाएगा। और हाँ, ये याद रखिए, हम आपकी झील से पानी वापस भी लौटाने आएंगे। एक अद्भुत दृश्य, विज्ञान और मानव के साहस का एक दमदार नजारा। Mi-17V5 have been extensively used for firefighting in Rajasthan, Himachal Pradesh and Northeast India. The Indian Air Force has flown a large number of such missions like the Theni Forest Fire and also during Karnataka Reserve Forest Fire. माता न जन्मेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा। तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा में, तलवार मिली कब मांगे से। प्राणों को त्रास मिले न कभी, यूं पीठ दिखाकर आगे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मरती। The Mi-17 is going to demonstrate the dousing of fire again. But this time, it will fly much lower to show how it can easily fly at this height.
The Mi-17 is demonstrating how it would fly in case it is operating in large open areas with less obstructions. Helicopter is operating at almost 50 meters only. From this height, the speed of water is less, but impact over fire point is much more. Mi-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान है। यह विमान युद्ध काल में बम, रॉकेट एवं गन पॉड सहित कुल 1500 किलो तक के विस्फोटकों को भी अपने साथ ले जा सकता है। इस विमान ने सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम इलाकों से लेकर विभिन्न मानव सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में इस विमान के द्वारा अपनी उपयोगिता को साबित किया है। इस विमान द्वारा शत्रु सीमा में अपने कमांडो को भी प्रवेश कराने का कार्य लिया जाता है। The Indian Air Force over the years has rendered yeoman service in times of disasters. All available resources of the Indian Air Force have always responded to enormous challenges with speed, resolve and fortitude. In the past 1 year, flood relief and rescue operations have been undertaken in Uttarakhand, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir. The Devgarh ropeway rescue in Jharkhand was another feather in the Indian Air Force's cap. The Indian Air Force also joined the firefighting operations in Rajasthan and Himachal Pradesh. Every day, the Indian Air Force undertakes numerous casualty evacuation missions in all types of terrain in various medical emergencies, stranding of tourists and security situations. Carrying out Bambi bucket operations in an urban situation is a challenging task wherein the nitty-gritty of drop are very precise. Owing to high-rise buildings and towers around, the chances of collateral damage are high and it requires extreme precision and no room for error. Dousing the fire with a Bambi bucket is no mean task, as the movement of the rotors of the aircraft cause the bucket to oscillate and make controlling the helicopter a challenge. दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में बड़े ही कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अस्थिर बकेट कभी भी विमान का संतुलन बिगाड़ सकती है,
जिसे पायलट को लगातार नियंत्रण में रखना होता है। इस प्रक्रिया में पानी के अलावा आग बुझाने वाला फायर रिटार्डेंट फोम भी भरा जा सकता है, जो कि आग को जल्दी से जल्दी बुझाने वाला एक रसायन है। After dousing the fires in far-flung areas, the Mi-17 1V will now display its unique capability of inserting special forces into deep enemy territory, depicted here at Sukna Lake. As a simulation exercise, Mi-17 1V will drop a Gemini boat into Sukna Lake and provide assistance to our Special Forces commandos, who are already in another boat at the far end of Sukna Lake. Whether they will come from right or left, for that, you will have to wait and watch. दर्शकों, आज इस सुखना झील में हमारा Mi-17 1V हेलीकॉप्टर विमान एक खतरनाक अभियान का दृश्य उपस्थित करेगा, जिसमें इस झील के पास वह एक स्पीड बोट को उतार देगा, जिसमें सवार होकर हमारे कमांडो अपनी आगे की ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। Inducted in 2001, Mi-17 1V has flown extensively at the highest battlefield at Siachen Glacier. The helicopter is capable of carrying out armed special heliborne operations like small team insertion and extraction, helocasting and slithering of up to 36 combat troops in confined areas undetected at low levels near the enemy objective. The helicopter is now flying at the nape of the earth and scanning for ground threats before insertion of the special forces. This entire activity which you're witnessing is called helocasting in military parlance.
दर्शकों, अभी आपने हमारे हेलीकॉप्टर को एक चक्कर लगाकर वापस फिर से लौटते हुए देखा। अभी हमारे हेलीकॉप्टर ने पहले दुश्मन के पूरे इलाके की रेकी यानी कि छानबीन की एवं अब वह सही स्थान का चुनाव कर चुका है। अब विमान एक सुरक्षित स्थान पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। इस कार्रवाई में पायलट को आदेशों को सुनने के साथ साथ दुश्मन पर नजर रखनी है और कमांडो के साथ संपर्क बनाए रखना है तथा अपने हेलीकॉप्टर को दुश्मन की रडार से भी बचाना है। After having inspected the lake for any enemy threats and flying very low avoiding the enemy radar, the helicopter gets ready to make an approach. And while the helicopter gets ready to make an approach, let me introduce you to today's team who are performing this daredevilry stunt. The captain of the aircraft is Wing Commander Irfan Wahid Khan Jarial, who is from the Queen of Hills, Shimla. An alumnus of National Defence Academy, he is commanding officer of 130 Helicopter Unit. Flying with him, his co-pilot is Coordinator Ankit Vashne. The Dilliwala Munda has flown almost all the combat roles of Mi-17, including flying in the mighty Himalayas at a young age. Chandigarh di Kudiyon, he is still a bachelor. दर्शकों, इस कार्रवाई को हेलोकास्टिंग कहा जाता है और इस अभियान में आपने देखा कि हमारे हेलीकॉप्टर ने स्पीड बोट को दुश्मन की झील या नदी में नीचे गिरा दिया और हमारे कमांडो अब उस पर सवार होकर अपनी आगे की कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से स्पीड बोट को नीचे उतारने के बाद कमांडो कितनी फुर्ती से आगे बढ़ रहे हैं। What you have witnessed is an amalgamation of robust engineering, dedicated training, supreme dexterity, absolute faith, and systematic coordination. The Special Forces boat is now headed towards for a quick retrieval. Our Special Forces troops are trained in combat search and rescue, destruction of enemy air defense, surveillance, and reconnaissance. And after they have retrieved the boat, you can see two Chinooks flying right in front of you in Beam 1 and Beam 2. दर्शकों, भारतीय वायुसेना में वर्ष 2019 में शामिल किया चिनूक हेलीकॉप्टर एक विशेष प्रकार का विमान है। यह विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर अपने बाकी हेलीकॉप्टरों से कुछ अधिक गुण को रखता है। अब आप देखेंगे इन दोनों हेलीकॉप्टरों की संयुक्त कार्रवाई और इन दोनों हेलीकॉप्टरों के विशेष गुण। This game-changing modern marvel is capable of performing transport operations, underslung operations, winching operations, medical evacuation, airdrops, tactical insertion missions, and special heliborne operation. Chinook is an all-weather aircraft which is capable of carrying out all the roles under the cover of darkness. This capability is greatly enhanced by the state-of-art night vision devices. Night operational capability speaks volumes of the modern machine
and the plethora of roles that can be envisaged using its capabilities. अल्ट्रा लो लेवल पर आता यह विमान दुश्मन की रडार से बच निकलने की काबिलियत को दिखा रहा है। अब विमान एक साथ संयुक्त कार्रवाई करेंगे। यह विमान अधिकतम 54 सैनिकों को अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। 10 टन से अधिक भार वहन क्षमता एवं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस विमान को एक विशेष विमान बनाती है। The state of being stationary in air at a point in space is called hovering, and it is to be the most skilled task and requires a very high degree of precision and crew coordination. What you are seeing in front of you is Chinook has done a tailover maneuver. अब यह विमान एक ही स्थान पर रहकर 360 डिग्री घूमकर पुनः वापस आने की कार्रवाई को प्रदर्शित कर रहा है। दर्शकों, हवा में एक ही स्थान पर रुके रहने का नाम होवर है। इस समय दोनों विमान झील से बस 30 फीट की ऊंचाई पर ही हैं। Now in front of us, you can see the Chinooks living up to their unit name of featherweights. You can see both the aircrafts climbing up steeply and getting away as if it was nothing more than a featherweight. It is truly a marvel to see these giant machines being tamed by the skillful pilots. Indian Air Force is proud to announce that we are exploiting the capability of these machines to the edge. And now you can see both the Chinooks are facing each other to perform its next maneuver. दर्शकों, अभी आपने देखा कि दोनों विमान आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक से गति के साथ आते हैं और अचानक से रुक भी जाते हैं। ऐसी स्थिति को क्विक स्टॉप भी कहते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं कि दोनों ही विमान एक साथ बाएं और एक साथ दाएं की ओर आ जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इस विमान का यह विशेष गुण किसी भी दुर्गम इलाके में इन विमानों को हेलीपैड पर पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर जहां पर उतरना चाहता है वह स्थान कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। Flying at these ultra low levels requires precise timing and coordination of all muscles of body and mind. And this is achieved by the aircrew through immense hard work and skill training. While it seems treat to the eyes, ladies and gentlemen, do not try these stunts at home. While the aircraft gets ready to perform its next maneuver, let me introduce you to the crew. Beam 1 has Wing Commander Dogra, Sada Apna Chandigarh da Puttar, who has studied from Army School Chandigarh and has extensive flying experience in JNK and Siachen Glacier. Along with him is Squadron Leader Thakur, who is a qualified flying instructor. JW Rivatra and LAC Charan are with them. In Beam 2 is Squadron Leader Amok Deshmukh. Squadron Amok Deshmukh has flown in many northeast places and he hails from Nagpur. Squadron Leader Surinder Singh Bhati has extensive flying experience in northeast hills as well. The seed of his flying dreams was shown here in the City Beautiful in Army School, Chandi Mandir. दर्शकों, आपने देखा था कि ये विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर न केवल आगे की ओर बल्कि ऊपर उठने के बाद पीछे की ओर से भी टेक ऑफ कर सकता है। दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हरा मेरा हर अंग है, शत्रु भी मुझसे दंग है, मेरे आगमन की आहट से वायु शांति भंग है, पल भर में मैं कर दूंगा शत्रु का काम तमाम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम।